Hey guys, welcome to MUFC Red Devils NCR Desi Football. We are back, and as we had always been saying, कि चैंपियंस लीग के बाद देसी फुटबॉल का आना काफी जरूरी हो जाता है. और कल जो मैच था हमारा, that was pretty. It was a match we did not deserve to win, but still we won this match, and I have no shame in accepting the fact that we did not deserve to win. And coming from the two losses that we had with West Ham in Carabao and with Aston Villa, uh, अगर हम कल भी हार जाते अपने होम पे तो 1974 के बाद this would be the first time that we have lost three consecutive matches at our home. So situation वहां तक आ चुकी थी कि हम 1977 1974 वाला रिकॉर्ड को छू कर वापस आ जाते. But then again, Ronaldo भैया CR7, Viva Ronaldo, last 90 plus 5 minute goal पूरे मैच में कहीं नहीं दिखे थे. He was nowhere. He was having a bad day. He was having an off day, but still, when it was there to be scored, he was there. And Lingard का काफी बढ़िया assist. So I'd like to start with Mojo. I have with myself Mojo and Rohit Singh as always. And Mojo, say I would like to ask you, what do you analyze about the last three matches? I would not just say कि आप CL matches के बारे में ही बताओ. The total last three matches that we have played, how do you analyze and what is your take on these three matches? And are we happy that we beat Villarreal at the end? देखिए, first thanks for having me. I'm actually sitting in my office, as you can see. पीछे मेरा white board वगैरह लगा हुआ है. So उसमें पता नहीं कोई notes भी लिखे हुए होंगे from the meeting in the morning. So I do apologize. उसमें targets तो नहीं लिखे हैं आपने ओली के लिए? नहीं मतलब I would love to do it if I could, but then see, last 3 games हमारे exactly वैसे ही हैं जो expected था. And the reason why I say this is क्योंकि somewhere down the line, let me first clarify my stance. I'm not Oli out, okay? But somewhere as fans and somewhere as a club, you got to start accepting the fact कि भाई जिस तरह का talent team में है, you got to be able to deploy and use that talent a lot better. I'm not saying कि आप हर game में gung ho and left, right and center putting in crosses, cutting through the defense and you're playing some fabulous football. आप हर game में वो नहीं खेल सकते. लेकिन फिर आप हर game में वो भी नहीं खेल सकते जो हम हर game में खेलते आ रहे हैं. So somewhere I guess either Oli still doesn't know how to, and I'll be honest enough in saying this, मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं ओली को ये समझ नहीं आ रहा है कि रोनाल्डो को कैसे यूज करना है. And the reason why I say that is because Ronaldo has been signed and he is your world class player now. So you have to have him in your team. And therefore the effectiveness जो ब्रूनो की होती थी वो उतनी टीम में दिखाई नहीं दे रही है. And as a result, somewhere everybody is running around like a headless chicken hoping for something to happen. कल हम गेम जीते, very good. There is no doubts about celebrating a win and the way we won. I mean, Sir Alex was in the stadium and to win it in the Fergie time, literally, and by, one of the players who he calls as amongst the best players, Sir Alex says that he coached. So, I mean, for Ronaldo to come back to score in the critical Champions League game when had we not won, I mean, just imagine, kal agar nahi jeete, all hell would have broken loose in terms of what Oli was doing, how he was setting up, हमारा coaching staff कैसा है, players तो हमारे पास बढ़िया हैं, and then the rival banter would start कि भाई give these players to Pep or to Tuchel or to Klopp and see the result. ये सब शुरू हो जाता है. But honestly, if I tell you, Oli has a lot to improve in terms of the tactical nuances. मेरे मैनेजर का ये आके कह देना रोनाल्डो के साइन करने के बाद that we are happy with what we have, wherein you really needed a CDM, so you should have got a CDM, and so that's my take, that we were lucky to win. Win is a win, but was it a beautiful win? No, it wasn't. Can it get better? Like everything in life, it can get better. So that's where I am. I think our coaching staff needs to get their head round with the talent they have, and they need to get them to play better. Yeah, thanks, Mojo. And Rohit Singh, आपसे मैं सीधे I'll start with one question. Matic जब pitch पे आया और Cavani जब pitch पे आया, then you can see the difference. तो आपने against
Villarreal, आप why did you not start with Matic and Cavani का ठीक है, I can understand कि आप Cavani को नहीं start कर सकते हो, you have Ronaldo. Why the Matic was not playing? आप can you just give us some lights on that? वो एक बढ़िया जो डिसीजन लिया था मैनेजमेंट ने कि मैटिच को नहीं खिलाना है, उसका क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक ओली ने 4-3-3 से स्टार्ट किया था कल, तो इट वाज लाइक मैकटोमिने इन द मिडल और पॉगबा और ब्रूनो दोनों बहुत एडवांस थे, तो इससे मे बी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये मस्ट विन गेम, वो भले ही बोल रहा था नहीं है बट सबको पता था ये मस्ट विन गेम है, ये होम पे है, ये जीतना जरूरी है ही है। वो ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ब्रूनो और पॉगबा आगे जा रहे थे, दे वर एट द एडवांस पोजीशंस because you wanted McTominay to stay deep and help your center back. For doing this, don't you think that Matic would have been a better option? आई थिंक मैकटोमिने इसलिए लिया उसने क्योंकि मैकटोमिने की पेस ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा उसकी, सिर्फ इस बात के लिए लिया, बट अगेन मैकटोमिने एज ए सिंगल डिफेंसिव मिडफील्डर कभी कोप अप नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैटिच के पास जो पोजीशनिंग सेंस है वो डेफिनेटली चाहिए था, और जैसे ही मैटिच आया अराउंड 70 मिनट में या जब भी आया, तो गेम पे होल्ड आ गया हमारा, कि मतलब गेम पे एक कंपोजर जो होता है वो आ गया एकदम से। तो मैटिच को भले ही स्टार्ट नहीं किया था ठीक है, बट 45 मिनट्स के बाद सेकंड हाफ में डेफिनेटली उसे सीधा आ जाना चाहिए था। राइट, हाँ, पर वो होता नहीं है हमारे साथ 45 मिनट में। मैंने तो कल शर्त भी लगा ली थी 100 रुपए का कि अगर सब्स्टिट्यूट्स होंगे कि नहीं होंगे हाफ टाइम पे। यस तो वो वी होता नहीं है। डोंट एक्ट क्विक, हम बहुत वेट करते हैं कि भाई कुछ हो कुछ हो हाँ, कुछ हो, फिर हम रिएक्ट करते काफी हैं। वेट कर जाते हैं। राइट, यस, काफी इम्प्रोवाइज वेट बहुत कर लेट जाते करते हैं। हैं। हाँ, और यस वी वॉन, हम जीत गए हैं, वी ऑल आर हैप्पी, बट एक इंसान खुश नहीं था और उस इंसान का ट्विटर पे वीडियो भी वायरल हो चुका है। डॉनी वैन डे वीक वाज वेरी एंग्री, आई गेस फ्रॉम हिज रिएक्शन वी कुड सी कि ही वाज नॉट हैप्पी। फीलन के ऊपर ऑलमोस्ट चिंगम भी फेंक दिया था उसने। सो व्हाट आर द प्लान्स दैट वी हैव फॉर डॉनी वैन डे वीक? मोजो, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? डू वी हैव एनी? If you recall, in our live Insta session with AB yesterday, we did touch upon Van de Beek's situation, and I did say that we have had, absolute disastrous players at United under Sir Alex Ferguson's watch as well, but they too were never treated the way Ollie's treating Van de Beek. I would go to the extent of saying that अगर ये कोई और प्रोफेशनल सेटअप होता, फुटबॉल क्लब नहीं होता, और कोई और मान लीजिए कोई और कंपनी होती, so I mean I think Van de Beek would have sued the company for sabotage or for unfair treatment or whatever. The way we are treating Van de Beek is shambolic. I mean, Ollie is a manager, he thinks what he has to do is right, so be it. But अगर पूरी दुनिया को बाहर दिख रहा है कि आप पॉगबा को रिप्लेस कर रहे हो, आप वैन डे बेक को नहीं ला रहे हो, आप फ्रेड को ला रहे हो, आप मैकटोमिने को रिप्लेस कर रहे हो, तब भी आप वैन डे बेक को नहीं ला रहे हो, so what is he there for? I mean, I will go to the extent of saying that for the way Ollie has handled Van de Beek, he's absolutely ruined the guy in last 2 years. He's lost his national place. He's starting meaningless games for us, or he's coming on at 87th, 86th, or 85th minute when the game is more or less done and away with. What I do not understand is he played 90 minutes against West Ham in the Carabao Cup. He was our man of the match. He proved beyond doubt that he can hold himself in the midfield and yet keep the midfield moving far better than McTominay and Fred. And yet he doesn't get the chance. I mean, what does a guy need to do to prove that he is worth that starting lineup? I'm baffled कि भाई ऐसा क्या हो रहा है वहां पे? You went on mute. You get far more, and I think I heard this somewhere, that if by playing shit, McTominay and Fred as a combination are given game after game after game, and you get one chance in the Carabao Cup and you're a man of the match and you still don't get the next game, you pretty much know that you're not required. And Ollie is putting out that signal. Ollie needs to be careful here because 99% Pogba आपका contract sign नहीं करेगा.
आपका next summer you're going to lose Pogba any which ways. You're going to you're going to not have Matic. You're going to not have Mata, and then there you are trying to alienate a player who could be on the same quality of almost a similar quality of Pogba in terms of his holding ability of the midfield. So I think Oli is running a risk of alienating a player who has that quality, and he's just not. I don't know क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता. And yes, मुझे भी नहीं समझ में आता है. And I'm honestly I'm being honest. मतलब ठीक है, I run a very small company, but I mean, if I was treating somebody like that, he would come and have a go at me. And yes, I think Van de Beek was absolutely right in responding the way he did. I mean, to see कि भाई players far inferior to his quality and players who are out of form get a starting lineup ahead. Get a starting chance or a substitute chance ahead of him. I would be flabbergasted, man. It's very sad. It is very sad. And Rohit Singh, आपने मेरे ख्याल से you told you were the first one to say कि भाई कवानी को extension दे दो, 1 साल उसे और रख लो कवानी को, because the work ethics that he is bringing with himself, the professionalism, that is commendable. वो उसकी एक क्लिप आई थी ट्विटर पे जिसपे कि वो बॉल के पीछे जो भागा है from the right to the left and to win the ball and give the pass to Ronaldo, वो आजकल के 18-19 साल के लड़कों को दिखानी चाहिए कि that is the example that you need to set. So Rohit Singh, what about Cavani? Everton against match है. Do you find Cavani starting at all? Yeah, I think he should start क्योंकि अभी वेडनेसडे को मैच है और अर्ली किक ऑफ है सैटरडे को 5 PM. So I think few of the players will be rested and I guess maybe हो सकता है रोनाल्डो भी rested हो तो Cavani definitely should start and we should definitely give a go of Ronaldo and Cavani together and see how they. वो 4-4-2 तो 4-4-2 कह लो या जो भी कर लो सर, वो फॉर्मेशन नहीं चेंज होगा. आप 4-2-3-1 ही खेलोगे. कल थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करके देखा था जिसमें कि मैकटोमिने को पीछे रख दिया था हमने. That did not work. And Rohit bhai, sorry to interrupt you in between. Oli ने अपने post match में बोला था that we tried to play McTominay as a number 6 and we realized that we were leaving our defense to Villarreal attacks and it was too open a game for our liking. So basically उसने आपको बता दिया है कि next game वो फ्रेड मैकटोमिने पे वापस आएगा. Right. हाँ, वो फ्रेड मैकटोमिने आएंगे और फ्रेड की बात चल रही है तो फ्रेड ने वैसे वो क्रॉस बड़ा प्यारा सा डाल दिया था जो रोनाल्डो ने हेडर जीत लिया. तो अब उसके 10 नेक्स्ट मैच तो पक्के हैं, वो खेलेगा ही खेलेगा. वो कौन सी मूवी थी वो, मेरे करण अर्जुन आएंगे वैसी होगा. मेरे मैकफ्रेड आएंगे. मैकफ्रेड ये साथ में ही अच्छे हैं, इनको अगर अकेले खिलाओ तो ये दोनों ही वेस्ट हैं. अकेले दोनों ही नहीं खेल सकते. पता नहीं यार. आप I really want to see. According to me, रोहित भाई, जो आप कह रहे थे कि आपने 100 रुपए की शर्त लगाई थी कि हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर हाफ टाइम पे वैन डे बेक एंड मैटिच को ले आते, I am 100% sure Villarreal wouldn't have had a sniff at a goal. They wouldn't have come into our half at all. मिडफील्ड में पूरा ओवरलोड हो गया. मैटिच का तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई एक प्लेयर जो डिफेंस से बॉल आगे फॉरवर्ड लाइन तक भेज सकता है, वो एक प्लेयर अभी मेरे को सिर्फ मैटिच ही दिखता है. Right. See, the problem I think is Matic doesn't have the legs anymore to last 90 minutes every 3 days, 4 days. तो आप उसको intelligently use करो ना. आप उसको 45 मिनट खिलाओ या 30 मिनट खिलाओ, लेकिन you find the right time to bring him on. हाँ, तो वो टाइमिंग भी तो नहीं पता चलता है हमें. और जितने भी जैसे मैं भी हूँ, all I say is कि भाई all he needs to improve, उसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. You cannot just come up and say कि भाई वेस्ट हैम के अगेंस्ट तो टीम नहीं थी, एस्टन विला के अगेंस्ट तो हमारे डिफेंडर्स ही इंजर्ड हो गए थे, तो होता है, चलता है, मुझे दुख नहीं होता है. ऐसा इस तरह से you cannot run a football club like Manchester United. I hope I mean exactly जो आप कह रहे थे, जिस तरह के ओली के explanations आ रहे हैं lately कि भाई एस्टन विला ने गोल स्कोर करा, so one of the Aston Villa players was standing ahead of David De Gea, obstructing him, and so you're finding reasons to justify why you're not playing well or losing. मैं तो कई बार 2-3 प्लेटफॉर्म्स में बोल चुका हूँ कि I hope somewhere Oli goes back to his interim manager mode, जहाँ पे भाई जो football we were playing was fabulous. Right. One touch, quick movement.
मतलब it was just out of this world and we were killing teams as if भाई हमारे सामने कोई भी नहीं है. And now we और are वो like भी slow, उस स्क्वाड से. मतलब पता नहीं क्या फुटबॉल खेल रहे हैं आजकल. इंटरिम मैनेजर और पोस्ट जब कोरोना रीस्टार्ट हुआ था फुटबॉल तब हाँ, पॉग्बा Exactly. खेल रहे थे, जिसमें मैटिच और जिसमें पॉग्बा का टोनी मार मिडफील्ड रहा था. था. राइट. टोनी मार रहा था. हाँ, टोनी वही मार रहे थे. अब टोनी पता नहीं कहाँ है. कल बेंच पे था टोनी की नहीं था? बेंच पे तो हो गई मेरे है. ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, शायद नहीं था टोनी. एनीवेज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवर्टन मैच. 5 बजे का किक ऑफ आई डोंट लाइक, बिकॉज जहां तक मुझे याद है 5 बजे का किक ऑफ में हम अच्छा खेलते नहीं है. आई पर्सनली डोंट लाइक 5 PM किक ऑफ, बट इट इज व्हाट इट इज. सो आई एम होपिंग कि कहीं कुछ चेंजेस हो जाए. शायद कवानी दिख जाए टू स्टार्ट एंड देन डॉनी खेल ले. बट डॉनी का खेलना इज नॉट इन एनीबॉडीज हैंड. वो भगवान को भी नहीं पता है कि कब खेलेगा. बट एवर्टन के लिए आई वुड विश कि भाई थोड़ा परफॉर्म अच्छा करके देन वी हैव एन इंटरनेशनल ब्रेक, तो थोड़ा थिंग्स सॉर्टेड हो जाएंगे. लोग वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द लीग पोजीशंस, लीग स्टैंडिंग. अभी हम सबके साथ ही साथ चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम काफी पीछे चले गए हैं या कोई एक टीम हैज टेकन अ ह्यूज लीड. तो अभी तक तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बट वी डेफिनेटली नीड टू इम्प्रूव एंड वी वांट ओली टू इम्प्रूव बाय लीप्स एंड बाउंड्स. What I'll say is Matic ने 20 मिनट खेले थे कल रात को. So Matic should be good enough or fresh enough to play those 60-65 minutes against Everton. And if he does, 60 then minutes. I'm sure we'll be a lot more stable and we'll be able to create far more opportunities than we have been lately. And but then जैसे आप कह रहे हो रोहित भाई कि league में we are not too far behind the others. But उसके लिए you got to thank David De Gea. David De Gea, commendable. I'm really sorry, मैं उसका नाम लेना नहीं लिया मैंने. Yesterday, अगर David De Gea नहीं होता, so I think we were probably looking at losing that game 3 or 4-1 or 4-3 or 4-2. बिल्कुल. And similarly, his saves against Southampton, his saves against West Ham have probably kept us where we are in the league. Otherwise, we probably would have been at about 6 or 7 points right now and mid-table. और कल का भी गेम आगे होता है. So imagine a situation being on 6 or 7 points in the league and having lost the first 2 games in the Champions League, and you're definitely heading towards a complete meltdown at the club at that. Yes, but David De Gea has been phenomenal यार. वो मतलब जब से इस सीजन में he has started playing सारे मैचेस, he is proving कि भाई I am the number one and there is no doubt कि nobody can remove me from that. And Henderson अभी फिलहाल I don't see him coming anywhere near the squad. कैराबाओ में खेला था, कैराबाओ से हम बाहर हो गए. Pretty smart move by Oli. कोई नहीं खेलेगा, सिर्फ De Gea ही खेलेगा. तो ठीक है, it's fine. I'm very happy with De Gea's performance. कवानी से I am pretty much impressed. कल के मैच में जो short cameo था कवानी का, I was very impressed. I found him the best player on the pitch. जो जितने देर के लिए आया था, he was the best player on the pitch. And the along thing with that happened in the end was अगर आपने नोटिस करा हो, विलारियल का डिफेंस जो for a good part of 70 minutes pretty much organized लग रहा था. Cavani के आते, they were all over the place because we were pushing hard and Cavani was making all these runs. Ronaldo had started making runs in from the center to the wing and everything, and their defenders were getting pulled all over the place. And as a result, I guess to a certain extent, some level of tiredness got to them. They just couldn't keep themselves cohesive जैसे वो पहले 65-70 minutes के लिए थे. And that allowed a few things to happen, and we were able to pull that through. But then, honestly, man, I mean, any United fan who's sitting there right now and happy about last night, yes, we should be, क्योंकि हम game जीते हैं, हमारे लिए important game था. But you cannot probably sit there and laud the performance. It was all over the place. We were running at times. We were running around headless chickens. It was all over the place, and let's congratulate. Don't forget to congratulate Alex Telles for scoring his first goal, which was pretty amazing. Right. Brilliant strike. Wonderful, brilliant strike. So let's end this session. Let's end this episode. Alex Telles के ऊपर end किया है, and Alex Telles, I hopefully doesn't get a chance to play against Everton because we need Shaw back. Harry Maguire थोड़े दिन के लिए गायब रहेंगे, I believe. So I want Shaw to be back and to be in his form. And let's hope Everton के लिए best of luck, guys. 5 PM kickoff है. I'm telling you, I'm not so positive about it. The only thing I would also want to add is कि I hope
Dalot now has the match practice or the match fitness, because Sir, yesterday he sir, was. I mean, I don't blame him. जिस बंदे को आपने पूरे सीजन अभी खिलाया नहीं हो, and he's only played for 30-40 minutes, and then for him to come and play in such a crucial game, he was being run over as if वो वहाँ पे था ही नहीं. वो था ही नहीं वहाँ. But I just hope yesterday's game has given him that the positioning sense and that match fitness, because he's going to be required against. I don't think he's going to be playing against Everton. Sorry, yes, so Wan-Bissaka is going to be back. Bissaka is back. Bissaka will be playing. Bissaka चाहे जैसा भी हो अच्छा है, डिफेंसिवली तो खैर उसके जैसा कोई नहीं है. Wan-Bissaka is brilliant. Brilliant. So anyways, thanks for coming, guys, and it was a pleasure hosting you all. And thank you. We will be back with another episodes. And for guys who are watching us on YouTube, please subscribe to our channel and follow us on Insta, Facebook and Twitter. MUFC Red Devil NCR के नाम से हैं. देसी फुटबॉल का एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं. And we will be back with another episode. International break में we will come up with something creative and innovative. We will try to be on those lines. And thanks for coming here, Mojo and Rohit, and have a great time ahead. And Everton के लिए best of luck. Thank you. Thank you guys. Take care. Thank you. Take care.